Yesterday's biggest story was the searches by the Income Tax Department at the British Broadcasting Corporation's office in Delhi and Mumbai. The searches is still on. The IT department calls it a survey based on a protocol, the notices that were sent but not replied to by the BBC. Now, the income tax sleuths have been conducting searches even now in Mumbai. This, remember, is over alleged tax irregularities by the British broadcaster. Sources have told India Today BBC is under the Income Tax Department's radar for allegedly flouting tax laws, mismatch of the transfer pricing and, importantly, diverting significant amount of profits, evading earlier income tax notices for international tax irregularities. So it's not that, according to the IT department, that they have just landed up right away, but it is the background of their consistent notices and irregularities allegation. But remember the timing, many are questioning, because there was a docu-series by the BBC that had become a huge controversy. It was about the 2002 riots and had Prime Minister's mention, and therefore the politics over it is also escalating, if that is the connect to it. And what you're looking at are some of the visuals that have been coming in. Let's quickly listen in to some reactions and a ground report by our colleague on the ground. बीबीसी के दिल्ली ऑफिस में इनकम टैक्स का सर्वे लगातार जारी है। पूरी रात इनकम टैक्स की टीम बीबीसी के दफ्तर के खासतौर से अकाउंट ऑफिस में मौजूद थी और उनका सर्वे का काम अभी भी जारी है। मंगलवार की दोपहर 11:20 पर इनकम टैक्स के तकरीबन 15 से 20 अधिकारी यहां पहुंचते हैं। सीधे वो टीम जो है वो पहुंचती है बीबीसी के अकाउंट ऑफिस में और अकाउंट ऑफिस में वहां पर 12 बजे से उनका काम शुरू हो जाता है। इस दौरान एडिटोरियल के भी जो कर्मचारी थे वो मौजूद थे, लेकिन धीरे धीरे एडिटोरियल के जो कर्मचारी थे वो अपने घरों के लिए निकल गए और उसके बाद बीबीसी की तरफ से कहा गया कि उनका पूरा काम जो एडिटोरियल का है वो लगातार चलता रहेगा। उनके कर्मचारियों से कहा गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें, लेकिन हर एक खबर, हर एक अपडेट उनकी तरफ से की जाती रहेगी। वहीं ये सर्वे पिछले अभी तक की अगर हम बात करें तो 19 घंटे से लगातार जारी है। जो भी दस्तावेज, जो भी कंप्यूटर वहां पे मौजूद है, उन सब की जांच की जा रही है। जो वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था उसको लेकर के ये सर्वे किया जा रहा है और जो जानकारी है, जब ये सर्वे पूरा हो जाएगा तो जो कुछ भी यहां से इनकम टैक्स के अधिकारियों को मिलेगा उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, आला अधिकारियों से उसको शेयर किया जाएगा और अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी पाई गई तो आगे इस मामले में कानूनन कार्रवाई की जाएगी। Remember, the IT department survey aside, this has become a huge political showdown because the united opposition, in a rare show of getting together, have attacked the government at the centre and Prime Minister Modi, alleging that this is a restriction on free speech and this is that in connect with the BBC docu-series. But according to the IT department, there has been a background of notices of tax irregularities, specifically charges of a Chinese firm that has been funding the cash-strapped BBC, and that has led perhaps to the BBC's door. So let's now bring you the political part of it, of how, in a rare show of unity, opposition is gunning for the government. There have been constant reactions from TMC, Congress, the CPM, Shiv Sena, all of these parties getting together to target the government at the centre. They are alleging that the British broadcaster is being hounded for the docu-series. And now then the BBC facing those survey, while the Congress slammed the centre, calling the search and seizure by the IT department an undeclared emergency, apatkal, they said. Condemning the survey, opposition is taking political pot shots as well. But the BJP has then responded. The government also gave out a reaction. Union Minister Anurag Thakur said nobody is above the law and the IT department would likely be sharing all the details of this survey soon. Remember, it will be very pertinent for the IT department to show that this seizure survey is being done with proper protocol in place and not what the opposition is alleging. इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे और कोई भी देश में न्याय से ऊपर तो या हमारी जो कानून व्यवस्था है उससे ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस इसे छापा पड़ी बीबीसी पर, तकलीफ हो रही है कांग्रेस पे। वही कांग्रेस है जो मेरे बिहार में कहावत है कि चलनी
दूसरे सूप को, जिसमें सहस्त्र छेद। ये इमरजेंसी लगा करके पूरे लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया। ये किसका राज था? बीबीसी पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये किसका राज था? अब बीबीसी पे हमला किया है। बीबीसी की क्रेडिबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है देश में, दुनिया के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये। आज भी गाँव के लोग जो है बीबीसी सुनते हैं और ये कहते हैं हाँ बीबीसी में न्यूज आ गई। मैं 40 साल से देख रहा हूँ बीबीसी में रेडियो न्यूज हो चाहे टीवी में आने लग गई, तो आज भी लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी है। कारण बताना चाहिए देशवासियों को, भाई आपने बीबीसी की जैसी संस्था को भी आपने टारगेट क्यों बनाया है? विश्व में पहली बार बीबीसी के 100 साल के इतिहास में उन पर इस प्रकार की कोई छापामारी और रेड हुई है। और उनका कसूर क्या था? उन्होंने एक गुजरात के दंगों की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें कि सभी का पक्ष रखा था। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के ऑफिसेस पे इनकम टैक्स ने छापे डाले हैं। अभी तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने पाबंदी लगाई थी, उसको बैन किया था और अब डॉक्यूमेंट्री बनाने की सजा दी जा रही है। भारत सरकार ने पूरे देश और पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि जो भी भारत सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Right now we want them to look at the present. Today people of India are demanding a probe into the Adani group. Instead of sending an income tax team or an ED team into the office of Adani, they are busy sending IT teams to the BBC office. IT raid is going on in BBC offices. The question is about the timing, whether it is a normal process or a vindictive process, because a few days ago BBC had released a documentary related to Gujarat affairs and criticized Narendra Modi. If it is a vindictive attitude of government, then it is we condemn it. It's going to be almost 24 hours since those survey and seizures have started at the BBC office in Delhi and Mumbai. Joining me now in Delhi is my colleague Aishwarya Paliwal for the latest. Aishwarya, what are you picking up? Are the searches still on? What is the IT department saying has led to this survey? Because the political part of it is clearly targeting it because of a docu-series. But what is the IT department's reasoning? Well, Pooja, let me tell you one thing very clearly. The IT department does not go knocking on every door. This is what India Today has picked up from the sources in the IT department. The CBDT very clearly saying that they do have proof that there was some kind of a mishap that had happened, because of which they have come knocking on. And let me tell you, the survey will continue from what we are understanding for the next couple of hours also. All the documents have been taken, all the laptops have been taken, the financials at the moment are being looked at. The IT department very clearly, though there is not an official statement, through sources we are getting to know that they do have proof, and which is why they have gone knocking on the doors. And once everything is clear, we are expecting some kind of official statement coming from the IT department, Pooja, by later tonight or by latest tomorrow morning. All right, Aishwarya, keep tracking all the latest on that. And Aishwarya, remember, we'll be tracking not just the political part of it, also what the IT department has to say. IT department not yet has given out an official comment.